नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, मतलब एआई से अपनी मर्जी का काम करवाने की कला। एआई तो देखिए शक्तिशाली है ही, पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो चाबी है जिससे हम उसकी सही क्षमता को आप कह सकते हैं अनलॉक कर सकते हैं। हमने इसके लिए कई तरह के स्रोत देखे हैं। कुछ शुरुआती गाइड्स हैं जैसे कोलोबा एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, फिर एक्सपर्ट्स की बातचीत भी है जैसे टेंसरऑप्स वेबिनार, रिसर्च पेपर्स भी हैं फिल आर्काइव से, और हाँ, गूगल सर्विसेज जैसे असली दुनिया के उदाहरण भी। तो हमारा मकसद सीधा है, इन सब में से जरूरी बातें निकालना और ये समझना कि भाई एआई से अच्छे नतीजे कैसे पाएं, वो भी बिना कंफ्यूज हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों होती जा रही है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो है रफ्तार और लागत। जैसे टेंसरऑप्स वेबिनार में बताया गया था, ये नए आइडियाज को टेस्ट करने का, मतलब प्रोटोटाइप बनाने का एक बहुत तेज और हाँ सस्ता तरीका बन गया है। अच्छा, जहां पहले शायद हफ्ते लग जाते थे, अब वो काम घंटों में हो सकता है। और ये सिर्फ काम के लिए नहीं, कला वगैरह में भी। वो कोलाबा एआई वाला उदाहरण मुझे काफी दिलचस्प लगा था। हॉगवर्ट्स कैसल को वाटर कलर स्टाइल में बनवाना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सही प्रॉम्प्ट से आप अपनी कल्पना को स्क्रीन पर उतार सकते हैं। लेकिन यहीं पर वो संतुलन वाली बात आती है। हाँ, संतुलन। हाँ, जैसा कोलाबा एआई ने भी कहा, प्रॉम्प्ट ऐसा ना हो कि एआई कंफ्यूज हो जाए। जैसे सिर्फ कह दिया एक तस्वीर बनाओ, ये तो बहुत अस्पष्ट है। और ना ही इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हो कि एआई की अपनी क्रिएटिविटी ही खत्म हो जाए। मतलब जैसे किसी लाल खलिहान का पूरा नॉवेल लिख दिया प्रॉम्प्ट में। हाँ मतलब एआई को रास्ता तो दिखाना है, पर उसे पूरी तरह बांधना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी शायद यही कह रहा था कि विशिष्टता, मतलब स्पेसिफिसिटी जरूरी है। सिर्फ अंतरिक्ष यान पर कुत्ता से बेहतर है कि थोड़ा और बताएं, कुत्ता कैसा है, यान कैसा दिख रहा है, माहौल क्या है। बिल्कुल, पर कितना विवरण काफी है, ये समझना ही अपने आप में एक कला है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए कुछ खास तकनीकें विकसित हुई हैं, जैसे जीरो शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये तो काफी आम हो गई हैं। हाँ, सुना इनके बारे में। मतलब एआई को या तो बिना उदाहरण के निर्देश देना या फिर एक दो उदाहरण देकर। डेवलपर्स गाइड और दूसरे स्रोत बताते हैं कि फ्यू शॉट खासतौर पर तब काम आता है जब हमें कोई खास फॉर्मेट चाहिए, जैसे जेसन में आउटपुट या भावनाओं का वर्गीकरण करना हो। लेकिन मैंने सुना है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में भी काफी बात हो रही है, सीओटी। ये क्या है और क्यों इसे इतना प्रभावी माना जा रहा है? हाँ, सीओटी। इसमें आप एआई को सीधे जवाब देने के बजाय सोचने का पूरा प्रोसेस बताने को कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जो एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले स्रोत हैं, वो बताते हैं कि इससे मुश्किल सवालों में, जैसे गणित की समस्याओं में, एआई की सटीकता कमाल की बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एआई को सिखा रहे हो कि सोचना कैसे है। जैसे उसे कहें, पहले 2 को 3 से गुणा करो, फिर उसमें 2 जोड़ो, अपना तरीका बताओ। ये तो वाकई कमाल है। और क्या ये सिर्फ अंग्रेजी में ही काम करता है? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मल्टीलिंगुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर जो सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक ये तकनीकें करीब 250 भाषाओं में एआई की क्षमता बढ़ाने में कारगर है। 250 भाषाएं? हाँ, और इसके लिए मॉडल को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये भाषा की बाधाओं को तोड़ने में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसका असली दुनिया में इस्तेमाल कहाँ देख रहे हैं हम? ओह, कई जगह। जैसे गूगल जेमिनी के उदाहरण देखें तो ईमेल टेम्पलेट बनाने, ब्लॉग पोस्ट का पहला ड्राफ्ट लिखने, मीटिंग के नोट्स बनाने, इन सब में ये बहुत काम आ रहा है। और कोडर्स के लिए भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लेबुक और ली बूनस्ट्रा के नोट्स बताते हैं कि कोड लिखने या मौजूदा कोड को सुधारने में भी इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है। और वो सिस्टम इंटीग्रेशन वाली बात भी थी कि एआई दूसरे सिस्टम से बात कर सकता है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। एलएलएम्स अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं बनाते, वो डेटाबेस से जानकारी निकाल सकते हैं, एपीआई के जरिए दूसरे काम कर सकते हैं। सोचिए किसी ई कॉमर्स साइट पर स्टॉक चेक करना हो या शिपिंग की प्रक्रिया शुरू करनी हो, ये सब एआई प्रॉम्प्ट के जरिए मुमकिन हो रहा है। ये तो हुआ स्टैटिक प्रॉम्प्टिंग, लेकिन अडैप्टिव प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग का भी जिक्र था। वो क्या चीज है? हाँ, अडैप्टिव प्रॉम्प्टिंग ये प्रॉम्प्टिंग का अगला लेवल है। इसमें सिस्टम एक ही प्रॉम्प्ट पर टिका नहीं रहता, वो रियल टाइम डेटा के आधार पर प्रॉम्प्ट को खुद ही बदलता रहता है, एडजस्ट करता है। मतलब डायनामिक। बिल्कुल। फिल आर्काइव का शोध दिखाता है कि हेल्थ केयर में इससे मरीज के हिसाब से बेहतर सलाह और निदान संभव हुआ है। कस्टमर सपोर्ट में भी संतुष्टि और काम करने की रफ्तार बढ़ी है। ये एआई को ज्यादा फ्लेक्सिबल और उपयोगी बनाता है। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। जाहिर है कुछ चुनौतियां या जोखिम भी जुड़े होंगे। बिल्कुल है। एक बड़ी चुनौती है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन मतलब जब एआई पूरी तरह गलत या मनगढ़ंत जानकारी दे देता है, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा बड़ा जोखिम है सुरक्षा का, खासकर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ये क्या होता है? विकिपीडिया और एआई सिक्योरिटी स्रोत बताते हैं कि इसमें कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति खास तरह का इनपुट डालकर एआई को गुमराह कर सकता है, उससे संवेदनशील जानकारी निकलवा सकता है या उसे कोई गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है। ये एक गंभीर सुरक्षा चिंता है। और एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की नौकरी का भविष्य क्या है? इस पर तो अलग अलग राय दिखती है। हाँ, ये इस वक्त एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ स्रोत जैसे IBM का ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट इंजीनियर या सेल्सफोर्स बेन के लेख ये तर्क देते हैं कि एआई खुद ही बेहतर प्रॉम्प्ट बनाना सीख लेगा
तो शायद इंसानी प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जरूरत कम हो जाए। मतलब ये भूमिका खत्म हो सकती है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ द फ्यूचर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे स्रोत ये मानते हैं कि जैसे जैसे एआई ज्यादा जटिल होगा, इंसानों और एआई के बीच प्रभावी ढंग से पुल बनाने वालों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये सिर्फ निर्देश देना नहीं रहेगा, बल्कि एआई के साथ एक तरह की साझेदारी होगी। और इसी बातचीत में एक और जरूरी पहलू आता है जिम्मेदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। सही कहा आपने। जिनोदो और क्रिश्चियन जेफेल के शोध जैसे स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि प्रॉम्प्ट डिजाइन करते समय हमें अनजाने में आने वाले पूर्वाग्रहों मतलब बायस से बचना होगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी होगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये इसके नैतिक इस्तेमाल का भी सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एआई को कमांड देना भर नहीं है, ये उसकी असली ताकत को बाहर लाने, उसे सही दिशा देने और हाँ, उसकी सीमाओं को समझने का भी तरीका है, चाहे वो कला बनाना हो, कोड लिखना हो या फिर मुश्किल समस्याओं को हल करना हो। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि प्रॉम्प्ट एक बहुत शक्तिशाली औजार है, एक लीवर की तरह। सही इस्तेमाल से एआई हमारा बेहतरीन साथी बन सकता है, लेकिन लापरवाही या गलत इस्तेमाल उससे अनचाहे नतीजे भी आ सकते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसे जैसे हम ऐसे एआई के साथ ज्यादा बातचीत करेंगे जो सटीक निर्देशों पर चलते हैं, क्या हमें अपनी बातचीत की शैली को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम ज्यादा प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। सत श्री अकाल, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰੇਟਿਵ एआई ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ एआई ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ एआई ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਯਾਨੀ LLMs, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਾਟ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਾਟ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਊ ਸ਼ਾਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊ ਸ਼ਾਟ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ AI ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟ। ਹਾਂਜੀ, ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ AI ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਦੱਸੇ। ਹਾਂ, ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ AI ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਦਰਭ ਯਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੰਮ, ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟਿਵ ਪ੍ਰੌਂਪਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਟਰੀ ਆਫ ਥਾਟਸ। ਇਹ AI ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਜੰਟਸ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ AI ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ APIs ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟੋਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਵੀ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AI ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟੂਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਚੇਨਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੂਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ AI ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AI ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ AI ਹੋਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਆਮ ਹੁਨਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ AI ਨੂੰ ਸही, निरपक्ष ਤੇ सुरक्षित नतीजे देने वाली ले जान, इस बारे सोचना बनता है। तो आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दुनिया में। हमारे पास कुछ टेक्निकल ब्लॉग्स हैं, गाइड्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स के हिस्से भी हैं। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि हम AI से बेहतर काम कैसे लें। बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे किसी को हिदायत देना, और AI के मामले में साफ और वाज़े हिदायत बहुत जरूरी है। बल्कि कुछ जराए ये भी बताते हैं कि कभी कभी AI को कोई खास लहजा सिखाना सिर्फ प्रॉम्प्ट से वो काफी मुश्किल हो सकता है। अच्छा जी, उससे अंदाजा होता है कि कितना नाजुक काम है। तो ठीक है, आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं, LLMs, ये करते क्या हैं बुनियादी तौर पर? देखें, आसान लफ्जों में ये मॉडल्स जो है ना, ये बस पैटर्न देखकर अंदाजा लगाते हैं कि अगला बेहतरीन लफ्ज या टोकन क्या होगा। अच्छा, जैसे प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस्ड। आप जो प्रॉम्प्ट्स देते हैं, यानी जो हिदायत, वो समझे कि शुरुआती पैटर्न होता है, और फिर मॉडल उसी पैटर्न पर चलता जाता है, लफ्ज ब लफ्ज जोड़ता जाता है, जब तक वो अपनी लिमिट तक ना पहुंच जाए या उसे कहा ना जाए कि बस रुक जाओ। सही। तो फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों इस्तेमाल करें? मतलब इसका फायदा क्या है? एक तो जाहिर है मॉडल को बार बार ट्रेन नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, एक तो ये इस्तेमाल करना आसान है, और खास तौर पर जब आप कोई नया आइडिया टेस्ट कर रहे हो, यानी प्रोटोटाइपिंग, तो ये निस्बतन सस्ता भी पड़ता है। ठीक। आप बुनियादी मॉडल को छेड़े बगैर सिर्फ प्रॉम्प्ट से उसके रवैये को किसी खास काम के लिए ढाल सकते हैं। ये फाइन ट्यूनिंग का एक मुतबादिल है, जो कि एक ज्यादा वो गहरा अमल है। अच्छा, तो वो फाइन ट्यूनिंग से मुख्तलिफ है? जी, फाइन ट्यूनिंग में तो मॉडल को खास डेटा पर मजीद ट्रेन किया जाता है। प्रॉम्प्टिंग ज्यादातर फौरी एडजस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। समझ गया। तो कुछ बुनियादी तकनीक थी, हमने सुना जीरो शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के बारे में, ये क्या चीज है? जी, जीरो शॉट तो बहुत सीधा है। आप AI को बस एक काम देते हैं, कोई मिसाल नहीं देते। ओके। फ्यू शॉट में आप इसे चंद मिसालें यानी शॉर्ट्स देते हैं, ताकि उसे अंदाजा हो जाए कि आप क्या चाह रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर? जैसे मान लें आप चाहते हैं कि AI किसी टेक्स्ट का जज्बा बताए कि वो मुस्बत है या मनफी। ठीक। तो आप उसे 2-3 मिसालें दे देंगी कि ये जुमला मुस्बत है, ये मनफी है। इससे AI पैटर्न पकड़ लेता है और बेहतर जवाब देता है। यानी फ्यू शॉट में हम उसे थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि करना क्या है। अच्छा, ये एक और टेक्निक, चेन ऑफ थॉट यानी COT, ये काफी दिलचस्प लग रही है। ये क्या है? हाँ, COT बहुत कारआमद है। इसमें हम मॉडल को कहते हैं कि वो सीधा जवाब देने के बजाय पहले ये बताए कि वो जवाब तक पहुंचा कैसे, यानी अपने सोचने का पूरा अमल मरहलावार बयान करे। अच्छा जी। और तहकीक ये बताती है कि प्रॉम्प्ट में सिर्फ इतना लिख देना कि आइए मरहलावार सोचते हैं, या लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। इससे खास तौर पर पेचीदा मसाइल में, जैसे रियाजी के सवालात, मॉडल की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो जाती है। हैं? सिर्फ इतनी सी बात से? ये तो कमाल है। जी, शायद इसलिए कि मॉडल मसले को छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। वाह, अच्छा, तो ये सब थियरी तो ठीक है, असल दुनिया में ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ओ, बहुत सी जगहों पर। जैसे मार्केटिंग वाले हैं, वो इसे इश्तिहारी मुहिम के नारे या कस्टमर्स के लिए ईमेल्स लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने शायद जेमिनाई इनडॉक्स का सुना हो। हाँ, सुना है। वो उसी की मिसाल है। फिर सेहत के शोबे में एक चीज है एडेप्टिव प्रॉम्प्टिंग। इससे चैटबॉट्स मरीज की खास सूरत हाल के मुताबिक ज्यादा मुतालिका मालूमात दे सकते हैं। अच्छा। और कस्टमर सर्विस में तो ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ताकि AI मुख्तलिफ तरह के सवालात और शिकायत को बेहतर समझ सके और जवाब दे सके। लेकिन ये हमेशा परफेक्ट तो नहीं होता होगा, कुछ मसाइल या हुदूद भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कभी कभी ये मॉडल ऐसी बातें कह देते हैं जो सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगती हैं, पुरएतमाद, लेकिन होती गलत है। इसे कुछ लोग हेलोसिनेशन कहते हैं। ओह, यानी खुद से घड़ लेना। जी बिल्कुल। एक और बड़ा खतरा है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन का। वो क्या है?
इसमें कोई शख्स जानबूझकर चालाकी से ऐसा प्रॉम्प्ट देता है कि एआई गुमराह हो जाए और कोई ऐसा काम कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए था, जैसे कोई हसास मालूमात जाहिर कर दे। ओह खुदाया, तो इसका मतलब है प्रॉम्प्ट डिजाइन करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल, अच्छे और महफूज प्रॉम्प्ट्स बनाना बहुत अहम है। ये तो समझ आ गया। अच्छा, तो ये प्रॉम्प्टिंग फौरी कामों के लिए ठीक है, लेकिन वो कौन सी सूरत हाल है जब ये काफी नहीं होती और हमें फाइन ट्यूनिंग की तरफ जाना पड़ता है? जब आपको बहुत ही खास गहरी महारत चाहिए हो या कोई ऐसा मुनफरिद लहजा या अंदाज जो सिर्फ मिसालों से सिखाना मुमकिन ना हो। जैसे आपने शुरू में कहा था कि किसी खास लिखारी का अंदाज अपनाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, ऐसी सूरत में फिर फाइन ट्यूनिंग यानी मॉडल को उसी खास मौजू या अंदाज के डेटा पर मजीद ट्रेन करना वो ज्यादा मौसर साबित होती है। ठीक है, और मुस्तकबिल क्या लगता है इस फील्ड का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? क्या ये एक अलग जॉब टाइटल रहेगा? नहीं, ये फील्ड ना बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ सर्वे तो ये कह रहे हैं कि शायद मुस्तकबिल में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की अलग से नौकरी की मांग कम हो जाए। अच्छा, लेकिन एआई के साथ मौसर तरीके से बातचीत करने की जो महारत है ना, वो तो तकरीबन हर शोबे में, हर किरदार में ज्यादा से ज्यादा अहम होती जा रही है। यानी ये एक बुनियादी स्किल बन जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक बुनियादी हुनर बनता जा रहा है, बजाय इसके कि ये सिर्फ एक मखसूस नौकरी का उन्वान रहे। तो खुलासा ये हुआ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई की ताकत को इस्तेमाल करने का एक अहम जरिया तो है, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी हैं और जिम्मेदारियां भी। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, और जाते जाते एक सोचने की बात छोड़ जाती हूँ। जैसे जैसे हम एआई के साथ बातचीत में बेहतर हो रहे हैं, क्या इसका असर हमारे आपस में बात करने के अंदाज पर भी पड़ेगा? दिलचस्प सवाल है। क्या हम एक दूसरे से ज्यादा वाज़े, ज्यादा इरादे के साथ बात करने वाले बन जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इंसानी गुफ्तगू को भी इंजीनियर करना शुरू कर दें? ये वाकई सोचने वाली बात है। Imagine for a moment having an assistant so brilliant, so capable, it processes information faster than you can even think. Yeah. But here's the catch. It's incredibly literal. Like really literal. You have to give it the exact instructions, all the context for it to give you precisely what you want. Right. There's a real strategy to that, a precision needed. That, in essence, is this fascinating world we're jumping into, communicating with artificial intelligence, especially these large language models or LLMs. Yeah, and it's really not about stumbling on some magic words, is it? It's much more about the craft, the design of that precise dialogue. Like programming with language. Kind of, yeah. Huh. You're shaping the conversation, trying to unlock specific outcomes from this incredibly powerful tool. That's exactly where we're headed today. Our deep dive is all about prompt engineering. And, this isn't just typing a question into a chatbot and crossing your fingers. No, definitely not. It's way more sophisticated. It's the craft, maybe even the science, of designing, refining, optimizing those inputs, the prompts for LLMs and other generative AI. So our mission today is to really unpack this. We want to get into what prompt engineering really is, how these LLMs actually work under the hood, the mechanics. And then explore the techniques people are using. Some are quite straightforward, others pretty surprising, ways to guide these models. We'll also look at where it's being applied right now, from like your daily work tools all the way to complex software development. And definitely tackle the future. What does it hold for prompt engineering? There's some really interesting, even conflicting views on its future as a career. Yeah, that's a big discussion point. And to make sure we cover this thoroughly, we've gathered a whole stack of sources. We're talking quick start guides, deep study materials, academic papers, industry analyses, the whole gamut. So you're getting a really well-rounded, deeply informed perspective on this. That's the goal. Okay, let's unpack this. So starting right at the foundation, prompt engineering, it has this ring to it. Sounds almost like, I don't know, wizardry. Huh, yeah, AI whispering and all that. But our sources are pretty clear. It's actually a very deliberate process. So what's the core? What makes it less magic, more precision engineering? You hit it right there. It's definitely not magic. At its heart, prompt engineering is about meticulously crafting your instructions, your prompts. Meticulously. Yeah, doing it in a way that these powerful AI models give you exactly the kind of high-quality, effective output you're actually aiming for. It's fundamentally about maximizing the LLM's performance. So it doesn't just guess. Exactly. It delivers what you need reliably. It really boils down to making LLMs do what we want. I like that framing. Making LLMs do what we want captures the intent perfectly. So it's not just, lobbing a vague question over the fence. Not at all. It's way beyond simple queries. Real prompt engineering involves giving very specific instructions, providing crucial context, sometimes even embedding examples right there in the prompt. Examples, okay. Yeah, this deliberate guidance is what really steers the LLM towards generating the response that's most accurate, most useful for your specific need.
Think of it less like chatting with a friend and more like giving a really detailed brief to a super intelligent but very, very literal assistant. Literal assistant. Okay, so we're guiding these models. But let's back up. What are these large language models, these LLMs we're guiding? Fundamentally, how do they chew on information? Right. So LLMs, they're a type of artificial intelligence model. Incredibly powerful ones. They're trained on just vast, vast amounts of text data. We're talking trillions of words, potentially. Trillions. Wow. Yeah, massive scale. And the goal is for them to understand, generate, and respond to human language in a coherent way. It's really an amazing feat of, well, computational linguistics. And when we talk about processing information, that term token always comes up. Can you break that down? What's a token and why is it so fundamental? Absolutely. Tokens are key. Think of it like this. LLMs don't see sentences or even words the way we do initially. They break language down into these fundamental units, these building blocks called tokens. Okay. Now, a token isn't always a whole word. It could be a word, sure. But it might also be just a part of a word, like ing or pre, or sometimes even just a single character or symbol. Little tiny pieces. Exactly. And the model's core task is this incredibly complex, continuous prediction game. Based on the sequence of tokens so far, what's the most probable next token? Ah, like autocomplete on steroids. That's a great analogy, like a hyper-advanced autocomplete, yeah. It just keeps predicting the next most likely token, building out the response piece by piece, token by token, until it hits some kind of stop condition, maybe a maximum length or a specific stop token it's been told to look for. That helps picture it, building thoughts token by token. So how do they learn this prediction game? Our sources talk about two big training phases. Pre-training and fine-tuning. What's the difference there? Why does it matter? These two phases are absolutely foundational to how LLMs become so capable. First, you have pre-training. This is the initial massive learning phase. The general education part. Precisely. The LLM is exposed to enormous, diverse text data sets. Think all of Wikipedia, huge collections of books, articles, websites, just a giant digital library. Okay. And during this phase, the model isn't being told specific answers, it's just learning the patterns, the structure of language. It builds its fundamental understanding of grammar, syntax, facts about the world, common sense reasoning, how words and concepts relate. It's building that vast vocabulary and general knowledge base. So pre-training makes the generalist. And fine-tuning then creates the specialist. Exactly right. Fine-tuning comes next. Yeah. This process adapts a pre-trained LLM1 that already has that broad understanding for very specific tasks or domains. Ah, so you don't start from scratch each time. No, that would be incredibly inefficient, hugely expensive in terms of computation and time. Instead, you take this knowledgeable generalist model and you give it further training, but this time on a much smaller, very specific data set. And crucially, this data set is usually labeled by humans for the specific task. Labeled data. Yeah, so this allows the model to become an expert for that particular job, whether it's, analyzing legal contracts, helping with medical diagnoses, generating marketing copy, or understanding customer support tickets. It's a much more efficient path to specialized competence. That efficiency point connects to the scale, right? We hear about LLMs having billions, sometimes hundreds of billions of parameters. What does that parameter count actually mean for performance and, accessibility? The number of parameters is essentially a measure of the model's size and complexity. Think of it like the number of connections in its artificial brain. And generally speaking, yes, larger models, those with more parameters, they tend to outperform smaller ones. Better quality answers. Usually, yeah. More nuance, better understanding of complex relationships, more coherence over longer responses. But, and this is a big but, this comes at a significant cost. Right, the resources needed. Exactly. Larger models demand immense computational resources, both for the initial training, which can take weeks or months even with powerful hardware, and just for running the model to get answers, what we call inference. This increases cost dramatically and can create real barriers to access. And when you say computational resources, the conversation always turns to GPUs, graphics processing units. They seem essential. Why are they so critical for LLMs? The GPUs are absolutely pivotal. Their superpower is parallel processing. They're designed from the ground up to handle many, many calculations simultaneously. Unlike a regular CPU. Right. A CPU typically handles tasks sequentially, or maybe a few in parallel. A GPU can handle thousands, even tens of thousands of parallel operations. And that's exactly what you need for the complex matrix multiplications and other math involved in training these huge neural networks on massive data sets. So they just speed things up dramatically.
dramatically. They accelerate the training process by orders of magnitude, making it feasible to build these billion parameter models in weeks or months instead of, well, potentially decades. It wouldn't be practical without them. Okay, so GPUs are the workhorses. But if these models are so demanding, how are we seeing them become more accessible, running on, say, laptops? Our sources mention optimization, things like quantization. Yeah, this is a really important development for accessibility. Optimization techniques like quantization are key. Methods like GPTQ, GGUF, GGML, these are all about making the models smaller and more efficient after they've been trained. How do they do that? Compress the brain. That's a good way to put it. They essentially reduce the precision needed to store the model's weights, those parameters we talked about. Instead of using highly precise numbers like 64-bit floating points, they use less precise ones, like 16-bit or even 8-bit or 4-bit integers. Does that hurt performance? There can be a small trade-off in quality, but often it's surprisingly minimal, and the benefit is huge. It drastically reduces the memory footprint and the computational power needed to run the model. Meaning these quantized models can often run on standard consumer hardware, regular CPUs, even on laptops or sometimes phones, without needing those massive expensive GPU setups for inference. It's a crucial step in democratizing access to powerful AI. That's fascinating, making the power more available. Okay, so we've got the foundations, what prompt engineering is, how LLMs work deep down. Now let's dive into the actual art of prompting, the techniques. How do people actually guide these AI behaviors? Right, this is where the craft really comes in. There are several core strategies, fundamental ways to steer the LLM towards what you want. Okay, let's start with the simplest sounding one, zero-shot prompting. What's that about? Zero shot is exactly what it sounds like. You give the model instructions, you ask your question, but you provide zero examples of the kind of answer you want. So you're just relying on its built-in knowledge. Completely. You're banking on its pre-trained general knowledge to understand the request and generate a good response. For instance, if you ask Q, yes or no, would a pear sink in water? A zero-shot prompt just asks that, expecting the model to access its knowledge about pears and buoyancy. But does it always work? Our sources hinted it can be tricky. It can be. The example in one source is interesting. The model answers, A, yes, a pear would typically float in water, not sink, which is a bit contradictory. Huh, yes means no. Sort of. It highlights that even simple zero-shot prompts need careful phrasing, and the model's internal knowledge isn't always perfectly consistent or accessed correctly without more guidance. Okay, so zero-shot is the baseline test. What about one-shot prompting, adding a single hint? Exactly. With one-shot prompting, you include one single example within the prompt itself. This example isn't necessarily to teach the model a new fact, but more to guide it on the format or style of the output you expect. Show, don't just tell. Precisely. It helps the model understand the structure. So using that pear example, if zero-shot failed, you might try. Q, yes or no. Is it common to see frost during some college commencements? A, the answer is yes. Q, yes or no. Would a pear sink in water? A. Ah, so the first question and answer sets the pattern. Right, that's single. The answer is yes. Example gives the model a clear format to follow. It's much more likely now to just output the answer is no for the pear question. That one example can effectively course correct the behavior. Makes sense. And then logically, few-shot prompting, more examples. You got it. Few-shot prompting just extends the one-shot idea. Instead of one example, you provide multiple examples within the prompt. Why do that? This is really useful when you need the model to learn a specific pattern, adopt a particular style consistently, or handle more complex logic. You're essentially giving it a mini training set right there in the context window. Like for specific output format, Yeah. JSON or something? Exactly. Or complex classification tasks. Another great example is code generation. If you want an LLM to write, say, a factorial function, you might first show it examples of how you want functions written. Maybe an example of a simple addition or subtraction function, complete with comments and error checking. So it learns the desired coding style. Yes. Providing those few examples leads to much more complete, well-formatted, and accurately checked code output compared to just asking for the factorial function cold, zero shot. You're embedding the requirements through examples. That seems super practical, especially for developers. Now, chain of thought prompting, this sounds different, like getting inside the AI's head, pushing it to reason. Chain of thought, or COT, is a really powerful and fascinating technique. The core idea is to encourage the LLM not just to give the final answer, but to show its work, to output its step-by-step reasoning process before arriving at the conclusion.
Why is that helpful? Does it make the answers better? Significantly, especially for complex tasks involving reasoning, like math problems, logic puzzles, or multi-step questions. By forcing the model to think aloud, it often avoids simple errors and follows a more logical path. It improves accuracy. And it makes it more transparent, right? You can see how it got the answer. Exactly. That's a huge benefit. It moves towards more explainable AI. We're not just getting an answer, we're seeing the reasoning chain. And you can often combine CoT with few-shot prompting for even better results. How do you trigger it? Just ask it to think step by step. Often, it's as simple as adding a phrase like, let's think step by step, or show your reasoning to the prompt. For example, when asking for a mathematical derivative, adding think step by step encourages that detailed output. Simple but effective. Okay, and then self-refine prompting. Is the AI editing itself here? That's a great way to describe it. Self-refined prompting is an iterative technique. The process looks something like this. First, the model generates an initial solution or output. Okay, draft one. Then, in a subsequent step, you prompt the model to critique its own output based on certain criteria. Critiquing itself. Interesting. And finally, you prompt it again to refine or rewrite the original output based on the critique it just generated. This loop generate, critique, refine can repeat until the result is satisfactory or some limit is reached. Can you give an example? Sure. Imagine an LLM drafts an essay. You could then prompt it. Critique the previous essay. Does it have enough specific examples to support its points? The model might say, no, the arguments are too general. Then you prompt. Okay, rewrite the essay, incorporating specific examples based on your critique. It's like building an internal editor into the process. Wow, that's a sophisticated loop. These core techniques offer a lot of control. But our sources mentioned even more advanced, practical methods. What else is in the toolkit? Definitely. Beyond these core 5, there are other powerful approaches. Directional stimulus prompting, for example, is a technique that came out of research. It involves using carefully chosen words or phrases, the stimuli, within the prompt, to subtly nudge the LLM's output in a very specific direction. Less explicit than examples, more like a gentle push. Interesting. And modular prompting, is that about breaking things down? Exactly. If you have a really complex query, modular prompting breaks it down into smaller, separate, more manageable parts or modules. Each module might have its own specialized prompt. Like a divide and conquer strategy. Pretty much. The LLM processes each module, maybe even using different settings or approaches for each, and then the results are combined or integrated to form the final comprehensive answer. Think of tackling a big research question by assigning different subtopics to different mini prompts. Okay, I've heard terms like soft prompting or prompt tuning or prefix tuning. These sound different from just typing words. Are they more technical? They are quite different, yes, and more technical. Unlike the methods we've discussed, which involve crafting text prompts, what we sometimes call hard prompts, soft prompting works at a deeper level. How so? Instead of using discrete tokens or words, it involves optimizing continuous vectors of floating point numbers. These vectors act like soft prompts or prefixes that are learned directly through mathematical optimization, usually gradient descent. So you're not writing words, you're finding optimal numbers. Essentially, yes. Yeah. The goal is to find these numerical vectors that, when fed into the LLM, guide its behavior towards the desired output without changing the LLM's underlying pre-trained weights. Ah, so it's like fine-tuning, but lighter weight. Exactly. It's a much less computationally expensive way to adapt or tune an LLM's behavior for specific tasks compared to full fine-tuning, which modifies all the model weights. It's a clever way to steer the model from within, almost. Fascinating. What about subject expert prompting? That sounds like you're asking the AI to role-play experts. It's very much like that. With subject expert prompting, you encourage the model to simulate a panel or group of multiple industry experts. A virtual roundtable. Kind of. You might prompt it like, imagine you are a group of 3 experts, a marketing strategist, a data scientist, and a user experience designer. Discuss the pros and cons of this product feature. The model then generates responses from each perspective, potentially even having them critique each other or score responses, ultimately leading to a more well-rounded, consensus-based answer. That's a creative way to leverage its broad knowledge. We touched on code generation via prompt earlier, but let's expand. How good is it really? It's getting remarkably good. LLMs can generate code snippets, full functions, or even entire scripts in many programming languages based on natural language descriptions. And it's not just writing new code. No, it goes beyond that. You can create new files,
modify existing code based on instructions, translate code between languages like converting a bash script to Python, and even help with debugging by explaining errors or suggesting fixes. That study you mentioned, the PESD framework. Right, Jonas Usnecki's thesis explored using generative AI for systematic software maintenance and improvement. It's becoming a powerful assistant for developers, significantly speeding up workflows and tackling repetitive coding tasks. And it's not just text and code, right? Visuals, too. AI image prompting. Absolutely. Prompt engineering is fundamental for text-to-image models like Midjourney or Stable Diffusion. The prompt is how you control everything. How specific can you get? Very specific. You use keywords to direct the visual style, the aesthetics. You can specify the medium like photograph, oil painting, 3D render. You can invoke art movements, impressionist, surrealist, cyberpunk. You can mention specific artistic influences, other artists' styles, even camera work like framing, close-up, wide-angle, drone shot. It gives users incredible artistic control. So many techniques. With all these options, what are some universal best practices for actually crafting good prompts, making them work effectively? That's key. There are definitely some best practices that emerge across the board. One of the most impactful is role assignment. Giving the AI a job title. Pretty much. Starting your prompt with something like act as a travel guide specializing in budget trips, or you are a senior software architect reviewing this code, dramatically focuses the AI's output. It adopts the persona, the knowledge, the tone associated with that role. It's a simple trick with a big impact. Okay, role assignment. What about making the prompt structure clear? Avoiding confusion between instructions and the data you want it to process. That's where delimiters come in. Using clear separators is crucial. Things like triple backticks, quotation marks, XML tags, example, or even just clear headings like instruction and text. Why is that so important? It removes ambiguity. The LLM knows exactly which part is the command and which part is the content it needs to work on. This prevents it from misinterpreting parts of your data as instructions, or vice versa, which is a common source of errors. Good tip. And what if the AI doesn't have enough information from the initial prompt? Can you make it ask for more? Yes, and that's often a very good practice. Instead of guessing, you can actually prompt the model to ask clarifying questions if the request is ambiguous or lacks detail. Turning it into more of a dialogue. Exactly. You might add something like, if you need more details to fulfill this request accurately, ask me questions first. This ensures the AI gathers the necessary information before generating an output, leading to much better, more tailored results. And naturally, providing good contextual information is vital. Absolutely critical. The more relevant background information or contextually relevant content you provide, the better the LLM can perform. If you ask it to summarize a meeting without providing the transcript, it can't do it. If you ask it to write marketing copy without product details, it will be generic. Context is king. Feed it the right info. Feed it the right info for it to generate meaningful, accurate responses tailored to your specific situation. Without context, you risk getting generic fluff or even hallucinations. In the language itself, should we talk like a computer or be more natural? Definitely aim for natural and descriptive language. Write prompts in plain, clear, conversational language. Imagine you're explaining the task or describing the desired image to a human who can't see it. Avoid jargon unless necessary. Yes, and avoid vague instructions. Things like fix this or write something about X are recipes for poor results. Be specific. If it's code, include the error message and the code snippet. If it's writing, specify the topic, tone, audience, length. You mentioned a test for vagueness. Yeah, a good self-check is to ask, could my prompt apply to dozens of different situations? If yes, it's too vague, refine it until it's specific enough that it really only points to your particular need or scenario. That's a great practical filter. Now, shifting slightly, besides the prompt content, we can also tweak parameters to control the AI's output style, right? Like its creativity or randomness. Absolutely. These parameters are like dials you can turn to shape the behavior of the generation process, complementing the prompt itself. The most well-known is temperature. Temperature, what does that control? Temperature essentially controls the randomness, or you could say the creativity of the output. It affects the probability distribution when the model is picking the next token. How does low versus high temperature work? Lower temperature values, say close to 0, make the output more deterministic and focused. The model will almost always pick the single most probable next token. This is good for tasks needing factual accuracy like math problems or summarization where you don't want surprises. Stick to the script. Pretty much.
Higher temperature values, like 0.7 or 0.9, increase randomness. The model becomes more likely to pick less probable tokens, leading to more diverse, surprising, and potentially creative outputs. You'd use this for brainstorming, writing fiction, or generating varied ideas. Okay, temperature controls randomness. What about top K and top P? They also affect word choice, right? They do, but in a different way. They control which tokens the model is even allowed to choose from before temperature affects the probabilities within that set. Top K is simpler. How does top K work? You set K to a number, say 10. The model calculates the probabilities for all possible next tokens, sorts them, and then only considers the top K, top 10 in this case, most probable tokens for the next step. All other tokens are ignored, zeroed out. It's a hard cutoff based on rank. Got it. And top P, which is also called nucleus sampling, how is that different? Top P is a bit more dynamic. Instead of picking a fixed number K of tokens, it picks the smallest possible set of top tokens whose cumulative probability adds up to or exceeds a threshold P. Cumulative probability. Yeah. So if P is 0.9 or 90%, the model looks at the most probable token, then the next most probable, and so on, adding their probabilities together until the sum reaches 0.9. That set of tokens becomes the nucleus it can choose from for the next step. So the number of options can change at each step. Exactly. If one token is overwhelmingly probable, the nucleus might just contain that one token. If probabilities are more spread out, the nucleus might include many tokens. It adapts based on the model's confidence at each step, which many find leads to better quality than top K alone. And you can mix and match these. Temperature, top P, top K. Absolutely. You often use them together to fine-tune the output. For example, a source mentioned aiming for coherent but still creative results, using something like temperature of 0.2, top P of 0.95, and top K of 30. Low temperature keeps it focused, high top P allows for some variety if needed, and top K provides a safety net. You experiment to find the right balance for your specific task. That's a sophisticated level of control. Okay, this is fascinating. We've covered LLM basics and the real art of crafting prompts. But you mentioned earlier, it's often not just about single prompts. LLMs usually live inside larger software systems. Right, this is where prompt engineering gets really integrated into software architecture. Here's where it gets really interesting, I think. How so? Because prompt engineering principles start to shape how entire applications are built around these LLMs. And an LLM-powered app isn't just the model itself. It's often a system with multiple interacting components. What are those typical components? Well, at the front, you usually have the chat component. That's the interface the user interacts with, where they type their prompts. Pretty straightforward. Okay, the front door. Then, behind the scenes, you often have a crucial piece called the router. This component is sometimes called the brain of the entire system. The brain, what does it do? Its job is to analyze the user's request and decide where it needs to go. Should it go directly to the main LLM? Does it need data from a database first? Does it require a specific tool or a different AI model? The router directs traffic. Like an intelligent traffic controller for AI requests. That's a perfect analogy. It figures out the right path or the right backend service to handle the incoming prompt effectively. And our sources said this router function is often implemented using agents. That sounds like a step up from a basic prompt. It absolutely is. Agents represent a much more sophisticated design pattern built on top of general prompting techniques. They're often the core logic driving that router brain we just talked about. What makes an agent so much more sophisticated than just a well-crafted prompt? What can it do? Agents have several capabilities that go far beyond simple input-output prompts. First, like complex prompts, they can maintain memory or state across multiple turns of a conversation or steps in a task. Okay, context over time. But crucially, they possess more freedom and planning ability. An agent can analyze a goal, break it down into steps, decide what actions are needed, and even change its plan based on new information. It can think ahead in a way a simple prompt doesn't. Planning. And perhaps the most powerful aspect, agents can take actions through tools. They aren't limited to generating text. They can be given access to tools like Python functions, external APIs, database connections, search engines. So they can actually do things in the digital world. Exactly. They can look up real-time information, perform calculations using external code, fetch data from a database, interact with other software. This ability to act on the environment is what makes agents truly powerful and transformative. That is a huge leap. I heard an analogy comparing agents to a chef. How does that work? The chef analogy captures it well. Think about asking a chef for a specific meal. You don't give them every single micro instruction like chop onion for 30 seconds, heat pan to medium high. Right, you just tell them the desired dish. Exactly. The chef understands the goal.
the meal. They know the steps involved, they figure out the necessary ingredients, tools data, they can access the pantry, database API, and crucially, they can improvise if an ingredient is missing or something unexpected happens. Okay, I see. An agent is like that, chef. It understands the high-level goal from the prompt. It can plan the sequence of actions using tools, fetching data, and it can adapt without needing a rigid, pre-scripted recipe for every single step. So how do you actually build one? Is there a specific programming loop or pattern? Yes, agents are often implemented using specific design patterns, frequently involving iterative loops. A very common one is the thought, action, observation loop. Thought, action, observation? Right. In this cycle, 1, the LLM receives the goal and the current state. It thinks about what step to take next. 2, based on its thought process, it decides on an action, maybe calling a specific tool, like a search API, querying a database, or even just generating text for the user. 3, it then observes the result of that action, the search results, the database response, etc. 4, this observation feeds back into the next thought step. The agent might even use another prompt to evaluate itself. Did that action get me closer to the goal? Do I have enough information? Should I take another action, or am I done? So it's constantly evaluating and replanning. Good ones are yes. This loop allows for that planning, tool use, and self-correction that makes agents so flexible and powerful. It sounds incredible, but also maybe fragile. What are the downsides or risks with agents? Can they go off the rails? They absolutely can. That's one of the big challenges. Agents can sometimes fail, especially in complex scenarios. They might struggle to know when a task is truly complete and get stuck in an endless loop repeating actions. Burning through resources. Exactly. They can also get sidetracked, going down rabbit holes, pursuing subtasks that aren't actually helpful for the main goal, deviating significantly from the original intent. This can lead to high computational costs and ultimately no useful outcome. So reliability is key. Absolutely. As one source aptly put it, a good agent is one that brings back our information on time. Efficiency, reliability, and staying on task are crucial. And designing robust agents that handle failure gracefully is a major area of ongoing work. It's clear these systems are getting complex. Let's talk about API integration. How are LLMs connecting to the outside world to take real action? API integration is where LLMs move from just processing information to actually initiating processes in other systems. You can configure an LLM, often as part of an agent, to communicate directly with application programming interfaces, APIs. Like web services. Exactly. So the LLM could formulate a request to an e-commerce ATI to add an item to a shopping cart, or check an order status, or even process a payment based on a conversation with the user. So the chatbot could actually complete my purchase. Potentially, yes. And it gets even more layered. One API call triggered by an LLM could, in turn, initiate a process that involves another LLM or another automated system. A chain reaction of AI tasks. So you could have a sequence like, user asked chatbot about product, chatbot, LLM1, checks inventory via API. API confirms stock guides user through purchase. User confirms chatbot triggers order placement via another API. That API triggers a notification handled by maybe another system, LLM2, to schedule shipping. It enables complex, automated workflows triggered by natural language. That's serious automation potential. Now, our sources also mention something called Semantic Kernel SDK. How does it fit into this picture? Is it a specific framework for building these systems? Semantic Kernel, often associated with Microsoft, is an open source SDK designed specifically to make it easier to integrate LLMs with conventional programming code. It focuses on that bridge. Bridging AI and traditional software. Exactly. Its core idea is combining natural language, semantic functions, prompts handled by an LLM, with native code functions, written in C#, Python, etc. SK provides tools to manage prompts, chain together functions, both semantic and native, and importantly, it utilizes embedding-based memory. Embedding-based memory. Yeah, it helps the AI remember context and retrieve relevant information efficiently. This supports sophisticated prompt engineering, enables chaining operations, and facilitates techniques like retrieval augmented generation, RAG. What's RAG again? RAG allows the LLM to pull in information from external knowledge bases like company documents or databases before generating a response, making its answers more factual and up-to-date. Semantic Kernel provides a structured way to orchestrate all these pieces, prompts, memory, RAG, native code, into a cohesive AI application. Okay, that clarifies how these complex systems are being built. We have a solid grasp now of the what, the how, and the architecture. Let's pivot to the real-world impact. Where is prompt engineering actually making a difference today in our daily lives across industries?
the impact is becoming really tangible. One of the most visible areas is in streamlining everyday work tasks through integrated AI assistance. Our sources specifically point to Gemini for Google Workspace as a great example. The AI built into Docs, Gmail, Sheets. Exactly. It puts AI capabilities right inside the tools millions of people use daily. It's not a separate app you have to switch to, it's embedded in the workflow. Prompt engineering is what makes it useful. Can you give a couple of concrete examples? How would someone use prompts within, say, Google Docs or Gmail? Sure. Let's say you need to prepare for an interview about a product launch. You could be in Google Docs, maybe looking at your launch notes, and use a prompt like, at Gemini, using @product launch notes, suggest answers to these potential spokesperson questions, list questions. Gemini uses the context of your notes to draft tailored answers. Okay, that saves time. What about something like internal comms? Right. You need to draft a company-wide email about a new intranet. In Docs, you could prompt, at Gemini, draft an announcement about our new user-friendly intranet, focusing on benefits like improved search and easier access to HR info. Keep the tone positive and encouraging. It generates a solid first draft you can then refine. Or customer service. Imagine you want to improve customer experience. In Gmail, you could prompt, quote, at Gemini, draft an email to colleagues in marketing, sales, and product, proposing a cross-departmental meeting next week to discuss recent customer feedback trends and brainstorm improvements. Ask for their availability. It helps kickstart that collaboration. These are great practical examples. It's embedding AI help right where you work. Precisely. Creating an email nurture sequence in Docs, asking Gemini and Slides to generate visuals for an ad campaign, summarizing long meeting notes in Meet, and assigning action items in Docs. These are all powered by prompt engineering within familiar tools, making everyday tasks faster and potentially more effective. It really shows how prompt engineering isn't just theoretical, it's becoming a practical productivity tool. Beyond these specific workspace examples, what about the broader impact across different industries? Where else is it changing the game? The applications are incredibly broad. In marketing, prompt engineering is used to guide LLMs for everything from refining overall strategy and generating creative campaign ideas to drafting personalized ad copy, social media posts, and email content at scale. It's revolutionizing content creation and customer engagement personalization. And project management. There, it's enhancing efficiency. Think. Helping with project planning, drafting task descriptions, automating status report summaries, identifying potential risks based on project data, even allocating tasks. It helps managers stay on top of complexity. Sales teams must be using this too. Definitely. Optimizing sales processes, generating personalized email outreach, answering common customer questions instantly, summarizing sales calls to extract key information, even drafting proposals or presentation outlines. It's a sales enablement booster. What about smaller players, small business owners? For them, it's huge. LLMs guided by good prompts can act like a virtual assistant, handling customer service inquiries, generating website content or blog posts, drafting marketing materials, managing social media, even helping with administrative tasks. It levels the playing field, giving them access to capabilities that used to require significant resources. And we talked about software development and maintenance quite a bit. That seems like a major transformation area. It really is. We covered code generation, debugging, improvement, translation. LLMs are becoming indispensable tools for developers, automating tedious tasks, accelerating development cycles, and even helping maintain legacy code bases more effectively, like through that PESD framework for systematic improvement. So it's augmenting the developer. What about customer-facing roles, like customer service? That's another huge application. Prompt engineering is the core of building effective chatbots and virtual agents that can handle a large volume of customer inquiries, provide instant support 24/7, answer FAQs, guide users through processes, and free up human agents for more complex issues. It's transforming the support landscape. And we mentioned AI image prompting too. Right, crucial in creative fields, advertising, design. Being able to translate a textual concept into a specific visual style through careful prompting is a powerful capability. It's impressive how widespread this is becoming. And it's not just in English, right? You mentioned multilingual applications earlier. How significant is that? It's incredibly significant. Modern LLMs are trained on multilingual data and are capable of understanding and generating text in a vast number of languages. Sources mention everything from Afrikaans and Arabic to Chinese, Hindi, Punjabi, Spanish, Urdu, Vietnamese, and many, many more. So the same techniques apply globally? Largely, yes, although there's active research into language-specific prompt engineering strategies.
Researchers are exploring how well these techniques work across different languages and data sets, like MLQA for multilingual question answering, IndicX NLI for Indian languages, KLUE for Korean, and so on. It means the benefits of prompt-driven AI can potentially reach a truly global audience, breaking down communication barriers. The potential reach is massive. Okay, we see the impact. Let's talk about the nuts and bolts again, the evolving landscape. What are the key tools people are using for prompt engineering right now? Well, we've already discussed integrated tools like Gemini for Google Workspace. For developers building custom applications, LangChain is a very popular Python and JavaScript library. What does LangChain help with specifically? It provides building blocks for creating LLM applications. It makes it easier to manage prompts, set up few-shot examples, chain together multiple LLM calls or calls to other tools like APIs or databases. Manage memory, basically. It simplifies building those more complex agent-like systems we discussed. So it's a framework for developers. What about the models themselves, beyond the big commercial APIs? There's a huge ecosystem of open-source models. Thousands are available on platforms like Hugging Face. Many of these have been fine-tuned by the community for specific tasks, styles, or languages, offering alternatives to the big commercial players, often with more transparency or customization options. And those quantized models we talked about, are they considered tools in this landscape? Absolutely. Formats like GPTQ, GGUF, GGML are crucial tools for making powerful LLMs accessible. By reducing the memory and compute requirements, they enable developers and researchers to run sophisticated models locally on laptops or standard servers without needing expensive cloud GPUs. This is vital for experimentation, privacy-sensitive applications, and wider adoption. Makes sense. So we have tools and models, but how do we know if our prompts are actually good? How do we evaluate and improve their effectiveness systematically? Evaluation is critical, and it's an active area of research. For certain tasks, especially text generation like summarization or translation, we can use established metrics. Things like BLEU, Bilingual Evaluation Understudy, and a recall-oriented understudy for gisting evaluation. How do they work, roughly? They essentially compare the AI-generated text to one or more human-written reference texts, looking for overlap in words or phrases, n-grams. They give you a score indicating similarity. Higher scores generally mean better quality, though they aren't perfect measures. Okay, quantitative scores. Are there tools to automate this? Yes, there are automatic evaluators. One example mentioned in our sources is AlpaCaval. It's specifically designed to evaluate how well instruction-following models, follow instructions. These tools can help benchmark different models or prompting strategies quickly. So metrics and automated tools help measure, but how do you actually improve the prompts based on that? It comes back to that principle of iterative improvement. You prompt, you evaluate the output, using metrics, automated tools, or just human judgment. You analyze what went wrong or what could be better, and then you refine the prompt. Like that chain of thought idea. Exactly. Discovering principles like encourage the model to think step by step came from this kind of iterative process. Researchers found it significantly improved accuracy on complex tasks. So the continuous cycle. Prompt, test, analyze, refine, repeat. That's how prompt engineering advances. This all sounds very powerful, but it also raises flags. What about the ethical and security concerns? This feels important. Extremely important. And there are significant challenges. One major one we need to talk about is prompt injection. Prompt injection, what is that exactly? It's a type of attack where a malicious actor crafts a specific input, a prompt designed to trick the AI. The goal is to make the AI ignore its original instructions or safety guidelines and do something it wasn't supposed to do. Like what? What's the risk? The risks are serious. A successful prompt injection could cause an AI to reveal sensitive information it has access to, like private user data or proprietary code. It could be manipulated into generating harmful content, spam, or misinformation. Or, if the AI is connected to other systems via API, like we discussed, it could be tricked into performing unauthorized actions, making purchases, deleting data, sending emails. Wow, so you could hijack the AI's capabilities through a cleverly worded prompt. That's the threat. And what makes it particularly tricky, as our sources point out, is that it's very hard to reliably distinguish a malicious instruction hidden within a prompt from a legitimate user request. There's currently no foolproof technical solution. Trying to strictly limit user inputs could also cripple the LLM's usefulness. It's a fundamental vulnerability tied to the way LLMs process natural language. A really tough problem.
Are there other major ethical concerns, maybe related to the data they learn from? Yes, another huge one is bias from low-quality data sets. LLMs learn from the data they're trained on, warts and all. Garbage in, garbage out. Pretty much. If the training data contains societal biases related to race, gender, religion, etc., stereotypes, misinformation, or is just generally low quality or unrepresentative, the LLM is likely to learn and perpetuate those biases. So it could give biased answers or recommendations? Yes, or generate text that reinforces harmful stereotypes. It might also present fictional or hypothetical scenarios as facts if trained on unreliable sources. This highlights a massive ethical challenge in AI development, ensuring data quality, fairness, representation, and mitigating bias is crucial, but also incredibly difficult at the scale these models operate. These are definitely critical considerations as the technology becomes more integrated. Okay, we've covered a huge amount of ground. Let's tackle that big looming question. The future of prompt engineering. Is it a flash in the pan, a role that's disappearing? Or is it actually a critical career path for the future? Our sources seem divided on this. They really do offer two quite different narratives, which is fascinating in itself. Let's hear the obsolete role argument first. Why might some people think dedicated prompt engineers are on their way out? The argument essentially is that the need for hyper-specialized prompt crafters might diminish relatively soon, maybe even by 2025, according to some analyses. Why? Because the AI is getting smarter. That's the core idea. As the underlying LLMs become more advanced, more capable, and better at understanding natural human language nuance, they become less sensitive to the exact phrasing of a prompt. The need to find the perfect magic words decreases. So the AI understands intent better, needing less hand-holding. Right. The thinking is that early prompt engineers provided a competitive edge by quickly figuring out how to optimize these initially brittle models for tasks like content creation or customer service. Yeah. But as the models mature, that specific skill of meticulous wording might become less critical, perhaps blending into other roles. Okay, that's one perspective. But then there's the strong counter-argument, the critical career path view. What's the case for prompt engineering being more important than ever? This view, which seems more prevalent in other sources, emphasizes that prompt engineering is actually emerging as a critical career path and a fundamental aspect of AI interaction and development. It sees the role evolving, not disappearing. Evolving how? Beyond just wording. Yes. The argument is that prompts are becoming less about single-shot questions and more like configurations that define how an LLM interacts with an entire back-end system. Connecting back to the architecture discussion, agents, routers, APIs. Exactly. In this view, prompt engineering is about designing the communication protocols, the workflows, the logic that orchestrates how the LLM interacts with databases, calls tools, routes requests, and manages conversations within a larger application. It's becoming a form of high-level system design using natural language prompts as the configuration interface. So it's a more strategic architectural role. Precisely. It's about bridging human intent and complex AI capabilities at a systemic level. As AI models get more powerful and integrated, the need for people who understand how to strategically design these interactions and unlock the full potential of generative AI will actually grow. It becomes a core competency for building sophisticated AI-powered products and services. Okay, so we have these two views, obsolete niche skill versus evolving critical competency. How do we reconcile them? Are they talking about different things? I think that's the key. They might not be entirely contradictory if you look closely. The obsolete view might be focused specifically on the narrow role of just typing prompts into a basic interface, tweaking words for slightly better output on simple tasks. That specific isolated job might indeed shrink or merge. Well, the critical path view is broader. Exactly. It refers to the deeper skill and discipline of understanding LLMs, designing interactions, integrating them into systems, using techniques like agents and tool use, essentially, the strategic guidance of AI behavior. This broader skill set isn't disappearing. It's becoming increasingly vital and likely integrating into roles like AI engineer, software developer, data scientist, product manager, even UX designer. So the dedicated job title, prompt engineer, might fluctuate and merge, but the underlying skill of effective AI communication and system design remains crucial and is growing. That seems to be the most balanced interpretation of the sources. It's less about the extinction of a role and more about the evolution and integration of a core competency as AI matures. The ability to talk effectively to AI at various levels of complexity is becoming fundamental. That makes a lot of sense. It's about adaptation.
Wow, okay. We have really journeyed through the world of prompt engineering today, from the basic definition and how LLMs tick. Through all those fascinating techniques, from zero shot to self-refine, agents and parameter tuning. To seeing the real world impact in our tools and across industries, the tools engineers use, the ethical tightropes. And finally, grappling with its future, understanding that evolution from niche skill to core competency. So what does this all boil down to? It feels like prompt engineering in its broadest sense is this vital bridge. It connects our human intentions to the raw power of artificial intelligence. It really is. And as AI continues its incredibly rapid evolution, our ability to communicate effectively, precisely, strategically with these systems, it's only going to become more crucial. Yeah, it seems less about finding that one perfect phrase, that magic word. And much more about deeply understanding the mind, the mechanics, the capabilities, and the limitations of the AI, and then figuring out how to best design the interaction to direct its incredible potential. So a final thought for you, our listener, to mull over. Think about learning a new human language. Mastery isn't just about asking basic questions, right? No, it's about nuance, understanding context, listening actively to the responses, and refining your own communication for deeper, richer interaction. Maybe mastering prompt engineering is similar. It's not just about asking, but about engaging in a sophisticated dialogue, listening to the AI's output, and refining how we communicate to unlock more profound results. So how might this evolving human-AI dialogue reshape the way you work, create, and learn in the very near future? नमस्कार। आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स के हिस्से और कुछ गाइड्स भी हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य ये समझना कि एआई से बढ़िया रिजल्ट्स पाने के लिए सही प्रॉम्प्ट या निर्देश देना क्यों और कैसे इतना जरूरी हो गया है। सुनने में तो लगता है कि बस एआई को कुछ टेक्स्ट दे दिया हो गया, पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब LLMs के साथ सही ढंग से बातचीत करने का तरीका है। देखिए, LLMs काम कैसे करते हैं। वो मूल रूप से अगले सबसे संभावित शब्द या टोकन का अंदाजा लगाते हैं। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट इस अंदाजे वाली प्रक्रिया को सही दिशा दिखाता है। जैसे आप किसी पेंटर को बताएं कि क्या बनाना है और किस स्टाइल में, तभी तो वो समझेगा ना कि हमें चाहिए क्या। अच्छा, तो अगर सरल शब्दों में कहें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या आखिर? देखिए, ये LLMs को खास मतलब डिटेल्ड और अच्छी क्वालिटी वाले आउटपुट देने के लिए निर्देश यानी प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करने, उन्हें बेहतर बनाने और क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज करने की प्रक्रिया है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रॉम्प्ट की क्वालिटी का सीधा असर एआई के जवाब की सटीकता पर पड़ता है। वो कितना रेलेवेंट है, कितना काम का है, ये सब प्रॉम्प्ट पर निर्भर करता है। सही प्रॉम्प्ट एआई की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है, आप कह सकते हैं, वरना तो बस ठीक ठाक जवाब भी मिलेंगे। सुनने में तो काफी काम का लग रहा है। अच्छा, कुछ बुनियादी टेक्निक से शुरू करते हैं। हमारे स्रोतों में 0 शॉट, 1 शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का जिक्र था। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बेसिक टेक्निक्स हैं। 0 शॉट में आप मॉडल को कोई उदाहरण नहीं देते, बस सीधा निर्देश। 1 शॉट में आप प्रॉम्प्ट के साथ एक उदाहरण भी देते हैं। इससे मॉडल को थोड़ा अंदाजा लगता है कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए। ओके। और फ्यू शॉट में आप कुछ उदाहरण देते हैं, मतलब आमतौर पर 2 से 5, ताकि मॉडल उस पैटर्न या स्टाइल को ठीक से पकड़ ले। एक स्रोत में ये बात दिलचस्प थी कि फ्यू शॉट में हमेशा ज्यादा उदाहरण देना बेहतर नहीं होता। कई बार 2-3 उदाहरणों के बाद सुधार बहुत कम होता है या रुक जाता है। अच्छा, तो मतलब क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से, और सही उदाहरण देना। जैसे एआई से अगर आर्ट बनवानी है तो सिर्फ एक पेंटिंग बनाओ कहना काफी नहीं होगा। शायद ये कहना बेहतर है, हॉगवर्ट्स कासल की पेंटिंग वाटर कलर स्टाइल में बनाओ शाम की रोशनी में। मतलब बैलेंस चाहिए। एकदम सही कहा आपने। बहुत ज्यादा अस्पष्ट भी नहीं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी कभी कभी ठीक नहीं रहता। बैलेंस साधना पड़ता है। अब थोड़ी एडवांस टेक्निक्स की बात करें। चेन ऑफ थॉट यानी COT प्रॉम्प्टिंग आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। ये मॉडल को सोचने पर मजबूर करता है ना, जैसे स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए। बिल्कुल। कोट मॉडल को सीधे जवाब देने के बजाय उसे स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए उकसाता है। जैसे हम कोई मुश्किल सवाल हल करते समय करते हैं ना, कि पहले ये फिर वो। इससे जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स समस्याओं में सटीकता बढ़ जाती है, खास तौर पर मैथ्स या लॉजिक वाले कामों में। कुछ रिसर्च पेपर्स में ये भी पाया गया कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी होती है। मतलब आप देख सकते हैं कि एआई किस नतीजे पर कैसे पहुंचा। ये पारदर्शिता वाली बात तो बहुत जरूरी है, खासकर जब भरोसेमंद नतीजों की जरूरत हो। और एजेंट्स, उनके बारे में क्या? वो तो और भी पावरफुल लगते हैं। हाँ, एजेंट्स तो समझिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अगला लेवल है। उनमें मेमोरी होती है, वो प्लान बना सकते हैं, और सबसे खास बात, वो बाहरी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहरी टूल्स जैसे कि? जैसे वेब सर्च करने के लिए API का इस्तेमाल करना, या किसी कंपनी के इंटरनल डेटाबेस से जानकारी निकालना। आप ऐसे सोचिए कि ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो न सिर्फ आपके निर्देश समझता है, बल्कि जानकारी जुटाने और काम पूरा करने के लिए खुद से
रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बनाते, ये बाकायदा टास्क पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ दिक्कतें भी तो होंगी। हाँ जरूर। एक ब्लॉग पोस्ट में ये जिक्र था कि एजेंट्स कभी-कभी लूप में फंस सकते हैं, मतलब एक ही काम बार-बार करना या अपने असली लक्ष्य से भटक जाना। तो उन्हें सही रास्ते पे रखना अभी भी एक चुनौती है। समझ गया। तो ये सारी टेक्निक्स असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? कुछ उदाहरण? अरे इनके इस्तेमाल तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्स्ट जनरेशन में सोचिए, जैसे गूगल वर्कस्पेस में जेमिनी यूज करके मीटिंग का सार लिखना या ईमेल का ड्राफ्ट बनाना। कोड लिखने और उसमें गलतियां ढूंढने में डेवलपर्स इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो सुने। ग्राहक सेवा में जहां एआई अब ज्यादा मानवीय और मददगार जवाब दे सकता है, यहाँ तक कि हेल्थ केयर में मरीजों के सवालों के जवाब देने या मुश्किल मेडिकल जानकारी को आसान भाषा में समझाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। वाह, ये तो काफी फैला हुआ है। लेकिन क्या इसमें कोई खतरे या चुनौतियां भी हैं? हाँ बिल्कुल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। एक बड़ी चुनौती है मति भ्रम, जिसे हैल्यूसिनेशन कहते हैं। इसमें एलएलएम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत या मनगढ़ंत जानकारी दे सकता है, इसलिए आउटपुट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। ये एक तरह का सिक्योरिटी रिस्क है। इसमें कोई गलत इरादे से ऐसा प्रॉम्प्ट डाल सकता है जिससे मॉडल अपने तय दायरे से बाहर निकल जाए या कोई सेंसिटिव जानकारी लीक कर दे। ओह, तो मतलब पावर के साथ साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जिम्मेदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। तो भविष्य को देखते हुए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या रोल रहेगा? क्या ये स्किल आगे भी काम आएगी? हाँ बिल्कुल, ये फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2025 में इसे एक अहम करियर ऑप्शन माना जा रहा है। जैसे जैसे एआई हमारे काम और जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, उसके साथ ठीक से बात करने की, मतलब कम्युनिकेट करने की क्षमता और भी जरूरी हो जाएगी। हम शायद और बेहतर टेक्निक्स देखेंगे, ज्यादा काबिल एजेंट्स देखेंगे और प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करने के ऑटोमेटिक तरीके भी शायद आ जाएं। ये सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि एआई के साथ मिलकर काम करने का एक नया तरीका बन रहा है एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ एआई को कुछ कहना भर नहीं है। इसमें सही तकनीक चुनना, अपनी बात साफ साफ रखना, जरूरत पड़ने पर उदाहरण देना और जो संभावित मुश्किलें हैं उन्हें समझना शामिल है, ताकि हम एलएलएम से सटीक और काम के नतीजे पा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉम्प्ट कैसे काम करते हैं, ताकि एआई की ताकत का सही और सुरक्षित इस्तेमाल हो सके, गलत जानकारी से बचाया जा सके और सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके। और हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और घुलता मिलता जा रहा है, क्या आपको लगता है कि प्रभावी प्रॉम्प्टिंग सिर्फ एक तकनीकी जरूरत बन के रह जाएगी, या फिर ये हमारी रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच का एक नया जरूरी हिस्सा बन जाएगी? सोचने वाली बात है।